Yes, we'll start with my introduction. We have introduction from few of you guys, and it's very good to know that you have been working since last 5 years, 3 years, 7 years, right? So we'll start with my introduction, what I do, where I do come from, what I have done as a graduation degree, and right now what I'm working on, and what are the technologies and tools that I'm dealing with in day-to-day my work. Okay, so let me share my screen and we'll start. Let me know once it's visible. Is my screen visible, guys? Yes. Okay. So this is a session for data analytics for beginners who are willing to start their career in data analytics field. Okay, and this is the path we can say which start from data analytics and it ends up to data scientist, being a data scientist. So you might have like our team might have reached out to you and explain more details about this thing, how we can start data analytics to and end up to the data scientist. So we'll go through all this process, all these points and details. And yeah, so starting with my introduction, all of you know my name, Sufyan Munshi, and I have like basically I belongs to mechanical engineering, and then I have done few months, like I have worked in mechanical engineering as a production supervisor for few months. Then I switched my career to analytics. I joined PGDM course, completed that, and then I have been placed at one of the finest company in Pune. That is a consulting services company actually, where I worked as a data engineer, and I have been placed thereafter to a client in USA, which is called Front Door, and there I worked as an Indian data science and engineer. And since I have been working there for three or almost 3.5 years, and I have been using SQL and Python as a language, database language and interpretation language. And apart from this, when it comes to the tool, I use Looker, Tableau, Power BI on the very major axis. And then I have done some few automation work as well using Python. So there I use Python Flask and Anaconda as well, Jupyter Notebook with the help of uh, I use Jupyter Notebook with the help of Anaconda. So, and adding to this, I have been working as a trainer, and I have trained a few folks as well in my this tenure, and like I believe to add some values to others' life, so that's why I'm into this field. Okay, and I have like hired few folks in my company as well. We have placed few folks from Edgrow as well. So this is my introduction. Okay, and anyone of you want to introduce yourself again, like for those who are remaining, or we can move ahead. Okay, so let's understand one thing: language is not a barrier. We can use any language what we want. Just of course English and Hindi mostly, because we are more comfortable with that language. So we'll try to keep switching the language within English and Hindi as well, so that everyone could understand it betterly. Okay. So these are the key points like what we are going to cover today. हम लोग आज क्या देखने वाले हैं, और ये सारे पॉइंट्स हम लोग थोड़ा डिटेल्स में देखेंगे. डेटा एनालिटिक्स क्या होता है, हाउ डज इट डील्स विद बिजनेस, हाउ डिड बिजनेस यूज दिस एनालिटिक्स to improvise their sales, to improve their sales and increase the profit.
है ना। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे एक पर्टिकुलर बिजनेस प्रोसेस रन कैसा होता है। एक अगर हम लोग कंसिडर करते कोई भी ई कॉमर्स कंपनी या कोई भी एक बड़ी एस्टेब्लिश्ड कंपनी को अगर हम लोग कंसिडर करेंगे तो उसका बिजनेस प्रोसेस किस तरह से रन होता है और उसमें क्या कितने सारे स्ट्रीम्स इन्वॉल्व होती है और वो स्ट्रीम से डील कैसे करते हैं। उसमें अगर कोई प्रॉब्लम रहता है तो उस तरीके से हम लोग उसको ओवरकम किस तरीके से करते हैं, बिजनेस के ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, ये हम लोग थोड़ा और डिटेल में देखेंगे, है ना। उसके बाद बिजनेस इंटेलिजेंस क्या होता है, बिजनेस इंटेलिजेंस क्या होता है, ये प्रोसेस कैसे काम करती है और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है और इससे बिजनेस इन्हांस कैसा होता है। बेसिकली बिजनेस इंटेलिजेंस जो है ये प्रोसेस एक बैकएंड में कंटिन्यूसली रन होती रहती है, राइट, टू इम्प्रोवाइज आवर सेल्स एंड इम्प्रोवाइज आवर प्रॉफिट। उसके बाद इस सारी प्रोसेस में डेटा एनालिस्ट का काम क्या होता है, व्हाट डज डेटा एनालिस्ट डू, ओके, क्या क्या टूल्स डेटा एनालिस्ट यूज करता है, राइट, बिजनेस एनालिस्ट क्या होता है, हाउ टू डेटा एनालिस्ट डील किन लोगों से करता है, राइट। उसके बाद हम लोगों ने केस स्टडी लिया है, रियल लाइफ केस स्टडी एक वॉलमार्ट की, क्योंकि हम लोग समझेंगे कि डेटा एनालिटिक्स यूज करके वॉलमार्ट ने कैसे अपने सेल्स को इंक्रीज किया था। काफी इंटरेस्टिंग है केस स्टडी ये। उसके बाद हम लोग थोड़ा और फोकस करेंगे कि टूल्स क्या क्या यूज होते हैं एनालिटिक्स में, है ना। टूल्स एज इन बीइंग अ डेटा एनालिस्ट टू बीइंग अ डेटा इंजीनियर, और एक first of all we'll look into things like what are the roles that are falling under data analytics. There are 3-4 main roles that falls under data analytics. You can be a data engineer, you can be a data analyst, right, और फिर उसके अंदर सब डोमेन और सब रोल्स होते हैं। तो उसके लिए कौन से टूल्स हम लोगों को ज़्यादा यूज़ करते हैं हम लोग, या कौन से टूल्स पे हमको कितना एक्सपीरियंस है, कितना उस पर एक्सपर्टीज होना है, दैट विल लुक इनटू दैट। और फिर हम लोग आगे कैरी करेंगे डेटा एनालिटिक्स इन डिफरेंट डोमेन। आज एनालिटिक्स अलग अलग डोमेन में किस तरीके से यूज़ हो रहा है और उसके एप्लीकेशन किस तरीके से है। और उसके बाद हम लोग देखेंगे फ्यूचर स्कोप कितना है, आज मार्केट्स में डेटा एनालिटिक्स और डेटा साइंस का रिक्वायरमेंट कितना है। तो ये सारे की पॉइंट्स हैं, ये हम लोग वन बाय वन देखते हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं डेटा एनालिटिक्स से। तो एनालिटिक्स में लाइक if I want to describe analytics, anyone here can explain what is analysis before starting data analytics? How do we do analysis? What are your thinking about analysis? Anyone can answer. Okay. I think guys be more interactive, please. This is not a college lecture Analyst, or analyst yeah, like an please go. expert, actually expert of the field, and he can collect the information and implement it accordingly under need. Also, analysts do a visual audits Mhm. to minimize the error and maximize the execution accurately and correctly. Okay. Right. This is what analyst is. So, and I'm asking, yeah, you're right actually. So let's discuss about analysis. What is analysis, right? We'll start from there only. एनालिसिस हम लोग एक डेटा को बैकअप रखते हुए अगर किसी चीज़ को हम लोग एक अंदाज लगा रहे हैं, राइट, तो उसको हम लोग बोलते हैं एनालिसिस। डे टू डे लाइफ में हम लोग काफ़ी काफ़ी कुछ चीज़ें एनालाइज करते हैं, राइट। हम लोग छोटी से छोटी चीज़ से लेकर बड़े बड़े बिजनेस के डिसीजन भी जो है एक एनालिसिस पर हम लोग लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आज हम लोग फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोगों का आज कोई एग्जाम है, पेपर है, तो व्हाट विल डू, विल ट्राई टू सी व्हाट वाज द क्वेश्चन दैट हैज बीन आस्क्ड इन द लास्ट 5 years, ओके, पिछले 5 साल में कौन से क्वेश्चन पूछे गए, कौन से टॉपिक से पूछे गए, राइट। हम लोग फिर क्या करेंगे, जो बुक्स हमारे पास है उसमें से वही टॉपिक को प्रायोरिटी देंगे, उसको पहले पढ़ेंगे, राइट। जो कम मार्क्स के लिए पूछा गया है, जो कम पूछा गया है, हम लोग उसको फिर उसके प्रेफरेंस उस तरीके से कम करते जाएंगे।
तो यही जो हम लोग जो है ये डे टू डे लाइफ में एक एनालिसिस यूज करते हैं हर छोटी से छोटी चीज के लिए, जहाँ हम लोग डेटा के साथ एक बैकअप देते हैं और एक अंदाज लगाते हैं, उसको बोलते हैं एनालिटिक्स, राइट। यहाँ पर डेटा जो हो गया हमारा 5 साल का क्वेश्चन पेपर्स होगी पिछले 5 साल के, एक डेटा सेट जो हो गया हमारी टेक्स्ट बुक्स हो गई, और उस पर हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं कि कौन से क्वेश्चन मल्टीपल टाइम्स पूछे गए लास्ट 5 ईयर्स में, तो वो क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है इस साल भी पूछे जाने की, राइट। तो दिस इज व्हाट एनालिसिस इज। गेटिंग यू गाइस। और कोई एग्जांपल आप दे सकते हो, लाइक let's take an example of in a very day to day life, we'll work on a very grassroots level to understand into details like how analytics work first, and then we can move further. एक और एग्जांपल हम लोग कंसिडर करेंगे, फॉर एग्जांपल अगर हमारे यहाँ शादी है तो विल ट्राई टू एनालाइज थिंग लाइक द, फॉर एग्जांपल 500 लोग शादी में आने वाले, तो व्हाट विल डू, द विल ट्राई टू फिगर आउट द डिनर अकॉर्डिंग टू दैट, राइट। कि इतना 500 लोगों के लिए इतना ये लगेगा, इतना ये लगेगा, इतना स्टार्टअप लगेगा, राइट। दिस इज व्हाट एनालिसिस इज। वी हैव अ बैकअप, वी हैव अ डेटा with backup of 500 peoples, right, and we'll try to analyze what is the total, what we can say, a meal gonna we gonna have, right. So this is how analytics work in business as well. See, analytics is a discovery, interpretation, communication of meaningful pattern or summary in the trends in the data. ओके okay. इस एग्जाम्पल इसको हम लोग समझते हैं एनालिटिक्स को बिजनेस में कैसे यूज करते हैं। एक अज्यूम करो कि हम लोग एक कार कंपनी या कार शोरूम के ओनर है, ठीक है। अब हम लोगों के पास एक डेटा है, लास्ट 1 ईयर में हमारे पास 1000 कस्टमर विजिट करके गए, राइट। अब हम लोग उस 1000 कस्टमर का डेटा जो है एक जगह हम लोग एनालाइज करेंगे, एक जगह उसको लेकर आएंगे पहले, राइट। अब जब मैं कहूँगा 1000 कस्टमर्स का डेटा, इट मीन्स दैट आई हैव अ डिटेल्स अबाउट द कस्टमर नेम, कस्टमर एज, what does they do, like either they are salaried or self-employed, right? Or if I'm a owner of a showroom, then I'll add the details like what model they like, right, which car model they like, okay, and what was the price of that, what is the price segment that fall into that, uh, according to that customer. तो ये हम लोगों के पास डिटेल्स, ये डेटा आ गया, राइट। अब अज्यूम करो लास्ट 1 ईयर में हमारे पास 1000 कस्टमर विजिट करके गए, ओके। हम लोगों ने उनका डेटा एक जगह कलेक्ट किया, उसको प्रॉपरली सॉर्ट किया, उसको क्लीन किया डेटा को, और उसको विजुअलाइज किया। विजुअलाइज करने पर पता चला कि वी गॉट सम इनसाइट दैट पीपल हु आर सैलराइड आर बाइंग मोर, आर बाइंग कार फ्रॉम 5 to 6 लाख ऑन एन एवरेज, राइट। आपको पता चला कि थाउजेंड्स में से 700 कस्टमर्स जो है वो सैलराइड पर्सन है, and they are buying only these type of cars, right. Similarly, you came to know that 100 out of 1000 we have 100 people who are buying SUVs, right. Are you getting my point, guys? It's an understanding. Okay. Yes, okay. Yes. Yeah. So if you know the pattern of your data, like what kind of people are preferring what things, then you can take out some useful insight from that data, right. If you come to know कि last 1 years में मेरा जो सेल हुआ है वो 1000 कस्टमर्स में से 300, 1000 कस्टमर्स में से फॉर एग्जांपल 1000 पीस मेरे या 1000 कार्स मेरी सेल हुई है, बट ओनली आउट ऑफ दैट 200 जो है वो ओवरऑल ईयर में सेल हुए, और 800 जो है वो ऑलमोस्ट कुछ फेस्टिवल्स के टाइम से सेल हुए, फॉर एग्जांपल दिवाली, दशहरा, राइट। पीपल यूज टू बाय न्यू थिंग्स, राइट, ऑन दैट पार्ट, ऑन दैट टाइम। तो आपका डेटा ये आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है कि दो यू हैव सेल 1000 of the cars, but 800 of them has been sold into this particular period of time, right. तो इस तरीके से फिर आप अपने अपने पास जो डेटा है उससे एक मीनिंगफुल पैटर्न आपने फेच किया बाहर, राइट। फिर उसके हिसाब से यू कैन टेक अ डिसीजन ऑफ योर
फॉर योर शोरूम फॉर द नेक्स्ट ईयर, कि नेक्स्ट ईयर मुझे क्या कौन सा बैच मंगवाना है, कौन से उसमें मॉडल ज़्यादा रखने चाहिए, राइट? So this is what analytics work in business side. Okay, this is an example. We'll take more example into why as we go forward, so that you guys can understand it in a better way. Okay, so analytics ये कोई tool नहीं है, technologies नहीं है, right? It's just a way of thinking on acting on data. आप एक डेटा को लेकर किस तरीके से सोच रहे हो, आप उसमें से क्या यूजफुल इंफॉर्मेशन फेच कर रहे हो, इसी को एनालिटिक्स बोलते हैं हम लोग. ओके, सिर्फ इसको सपोर्ट करने के लिए हम लोग कुछ टूल यूज करते हैं. फॉर एग्जांपल डेटा को स्टोर करने के लिए, क्लीन करने के लिए एक ओरेकल हम लोग डेटाबेस यूज करते हैं. वही डेटा को आगे विजुअलाइज करने के लिए, उसमें से कुछ इंसाइट निकालने के लिए कुछ और टूल यूज करते हैं, जैसे हम लोग विजुअलाइजेशन टूल जिसको बोलते हैं, पावर बीआई है, टैब्लू है, लुकर है. ये तीन अभी मार्केट में काफी ज्यादा फेमस है. तो ये टूल हम लोग यूज करके डेटा को इस तरीके से विजुअलाइज करते हैं, एंड देन वी कैन फाइंड आउट द ट्रेन इनटू द डेटा. Okay, so if you want to see, like, okay, one more thing here I want to add. This is a whole thing about what how you think and acting on the data, right? So while joining the Edgrow, we'll try to work on your thinking capability or your logical reasoning, right? And your technical skills. For example, we'll try to teach you SQL and visualization tool Power BI, how to do EDA by using Python. But few things we are expecting from you guys as well. We are expecting we are expecting something like confidence, communication, and your positive attitude from this course actually. The reason why I'm telling you this thing, कि आप अगर एनालिटिक्स सीख भी लो, आप टूल सीख लो, but at the end you have to present what your findings are, right? That's a part of storytelling. So if you don't have confidence, you don't have enough communication skill, then there will be a lag between you and the company people, right? So by going forward, just try to work on your confidence as well, communications as well, and the attitude as well. Attitude I mean to say positive attitude. Like if you have some task, then how you are taking that thing onto yourself, right? So let's see the definition of data analytics. What actually data analytics is, what we have discussed here, it's totally into this two like sentence we can see. Data analytics is the process of examining, cleaning, sorting, and visualizing data set in order to draw conclusion from the information it contains, right? So data अगर for example हम लोगों को किसी एक चीज से कोई conclusion fetch करना है, तो we have to take the data from the past itself. This is what analytics is. If you have data from last 1 year, 2 year, 5 years, then you can easily predict the or forecast the what you can say your result for the future. For example, if you have a sales of 10,000 this year and you have a data of this year, then you can predict the sales for the next year as well. Okay, so this will help organization understanding better understanding their client, better analysis their promotional campaign, customized content. Okay, so just get back to that example of car showroom owner. Okay, if you know that which kind of people or what are the customer that are buying this type of cars only. Okay, if you came to know that politicians are buying only SUVs, if you came to know that salaried people are buying hatchback or sedan only, so you will try to analyze thing according to them, right? And you'll try to you know understand them in a better way. आपको ये चीज समझ में आ रही है, राइट? कि एक अगर पॉलिटिशियन हमारे पास विजिट कर रहा है, तो ही विल बी मोर लुकिंग फॉर एन एसयूवी, राइट? Just for an example, it's not a real life example, just for an example I'm giving you guys. अगर इस तरीके से आप अपने क्लाइंट को एक बेटर वे में अंडरस्टैंड कर सकते हो, बेटर वे में समझ सकते हो कि व्हाट दे वांट एक्चुअली. इफ यू अगेन अगर हम लोग को कोई कैंपेन चलाना है या कोई एडवर्टाइजमेंट कैंपेन करना है कि कैसे हम लोग प्रमोट करें हमारे शोरूम को, तो उस तरीके से हम लोग उस एरिया के लोगों को इजीली समझ चुके हैं हमारे लास्ट ईयर के सेल्स के बेसिस पर. तो हम लोग कैंपेन उस बेसिस पर ऐड और वो उस तरीके से हम लोग उसको डिस्प्ले करेंगे.
लाइक पीपल लाइक टू हैव मोर डिस्काउंट, सो हम लोग एक पर्टिकुलर कैलकुलेशन फिक्स करके उस पर डिस्काउंट ऑफर करेंगे, राइट। इफ यू सी कि यार इस एरिया में जो है हम लोग मोस्टली जो है सीडान्स हम लोग की ज़्यादा बिकी हुई है, तो विल ट्राई टू add sedans into that part as well. Okay, so this is how analytics deal into the business. Any question here, guys? Okay, no questions. Okay, see, this is the same thing what we have discussed in the last slide. How, what are the objective of analytics? Okay, and how analytics affect the business. So, so the very first thing is improvised decision making. Okay, you can make a good decision on the basis of customer, you know, right? You can optimize thing for them, you can optimize choices for them. This is the, and you can have a good decision making power by using analytics. You have better customer service. If you know your customer, then it will be very good for you and customer as well to provide some recommendation to them, right? If you know your customer who is buying which thing, then it will be very best for us to show only those things to them. Third thing is efficient operation. Efficient operation basically, if we are, for example, let's again go back to that same example. If we have sell thousands of cars, right, to thousands of people, 1000 car to 1000 people, and you know that this kind of people are buying this type of cars only, so it's a kind of efficient, it's a kind of improvement in your process, right? Then again, if that type of customer, for example satellite person, is visiting to your showroom, then you'll try to show him or try to sell him them hatchback only, right? If your data says in that way. So instead of focusing on all overall 1000 people, you'll just focus on those 200 to sell that part, right? So that's what we call efficient operation. Again, it helps in effective marketing. If you know the details, if you know the our market audience, then it's very effective in marketing as well. These are the details like what we have discussed here, how we improve decision making. Data analytics eliminates guesswork and manual tasks. Okay, so let's take an example for a superstore. Okay, earlier when we don't have a storage for data or analytics here, what happened, यूएसए में फॉर एग्जांपल हम लोग एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं कि सुपर स्टोर फ्रॉम यूएसए, वहां पर हम लोग अगर देखेंगे तो इफ यू आस्क देम, इफ यू गो बैक टू 80s or 90s and ask them, do we have this thing like do we have jam or bread available, then that guy will stood up and then walk up to that aisle and will check whether we have or not, and then he come back to us and say ki yaar, this is, we don't have this right now in stock, we can have available in the next stock as well. So this is what happened in the back in 80s 90s when we don't have analytics, we don't have data. Now we are trying to, you know, maintain the data what we have in our stock, so that's guesswork got reduced. We can easily predict what we have and what amount we need to bring, right? Similarly, we have better customer service, what we have discussed in the previous slide as well. Just remember this.
Yep. Sorry. Is my screen visible? Is my screen visible, guys? Yes, yes. Yes, sir. Yep. Yeah, Yes, sure. sir. So we were discussing these objectives of data analytics, right? How we can optimize how we can provide better customer service, how we can optimize our operations, and can use effective marketing, can use analytics in effective marketing as well. Okay. So coming back to customer service, better customer service. Okay, it's again the same example that we are taking from initial slide, right? If you know the detail of your customer, if you know how your customer or what are your customer preferences, then you can easily sell your product to the customer. So this is all about, if you know them, then you can optimize their choices, you can betterly recommend them your product. So this is what better customer service is. Again, this efficient operation. if we if you know what are our target audience, and if you know what kind of people like what things, then it's very efficient for us to operate as well. It's a cost saving as well, it's time cutting, cost saving, cost cutting. We can optimize all this thing over here, and we can boost our production as well. And it's also help in effective marketing. So for example, if you want to launch your product into the market, so you will be referring the data what you have, and based on that data you will be you will be launching your product on that basis. You will provide a specification of that product in with respect to data. For example, let's take an example of insurance company. So how does insurance work, you all guys know, right? अगर एक टर्म प्लान हम लोग को मार्केट में लाना है, तो विल व्हाट विल डू, हम लोग लास्ट 5 इयर्स का जितने हमारे कस्टमर्स है उनका डेटा हम लोग फेच करेंगे सिस्टम से, उस डेटा को प्रॉपरली एनालाइज करेंगे, उस डेटा को प्रॉपर पहले अरेंज करेंगे, उसको क्लीन करेंगे, सॉर्ट करेंगे। इसको बोलते हैं प्री प्रोसेसिंग। ओके, हम लोग आगे देखेंगे प्री प्रोसेसिंग कैसा होता है डेटा, और उसको विजुअलाइज कैसे करते हैं। तो एक प्रोडक्ट अगर हम लोग को मार्केट में लॉन्च करना है, एक टर्म प्लान या एक यूलिप प्लान, तो विल टेक द डेटा, विल एनालाइज द डेटा, एंड विल फेच आउट सम फाइंडिंग फ्रॉम दैट। फॉर एग्जाम्पल, हम लोगों को डेटा विजुअलाइज करने के बाद पता चला कि मोस्ट ऑफ द कस्टमर विच आर बाइंग द प्लान फ्रॉम अस हैव सैलरी on and around 40 to 50,000. Okay, they are the people who are paying the premium of 2-3,000 mostly, right? They can afford that much of premium. So based on these information, we can uh, design that product, we can design that new term plan, and uh, we can say we can share it into the market. So this is how analytics works actually. See, in a very simple language, if I say what is analytics, so this is all say about the analytics. What is analytics? If you have a good business understanding, if you know how business works, if you know how what are the aspect that business is like, what are the aspect that business deals with, okay, और आपको अगर पता हो कि बिजनेस किस तरीके से काम करता है, व्हाट आर द अप्स एंड डाउन दैट बिजनेस फेसेस, और उसके साथ इफ यू हैव अ गुड एक्सप्लोर डेटा एनालिसिस स्किल, if you have a good skill set, then you are going to contribute a lot into the business growth. So this is what analytics is actually. Any doubt till here? Hello. I think I'll take it as a no, but guys, please try to interact with us. This is not a college lecture or a seminar that you are attending. It should not be one way, right? We'll try to be more interactive. We'll try to make this session interactive. We want you to be more comfortable and engaged into this lecture as well. Okay, let's moving forward. Let's understand. We have one video in the next slide. So just see that video
and we'll take one question from that, each of us. Okay, I'll throw a question. Just understand that video, and we'll give one scenario to you guys, and how you will take decision according to that. We'll try to understand that. Okay, guys, you there? Yes, sir. Okay, yeah, please please be responsive. Even I can Even I understand. can. Yeah, please go through this video first. क्लियर दिख रहा है क्या वीडियो? जी दिख रहा है सर। Okay. Okay. समझा कुछ वीडियो से? Okay. See, we have a group of 100 people, and we are trying to analyze those 100 people. Okay, this is what video is all about, and how analytics works, and how business make the decision. This is what we are trying to understand from this video actually. Okay, see, we have 100 people, out of which 60 are Asians, 11 are Europeans, 15 are Africans, and 14 are Americans. Okay, this is again an imaginary data set we are using. Now, see, out of these 100 people, we have this much of people within their age from 25 to 54, this much people from 65 plus years. These are the children who are from 0 to 14 years, this from 15 to 24 years, and this we have, I think, less than 14, I think. So this is the another way. How is, are you getting my point? Like how we are trying to understand those 100 people. If you pivot their religion, then this much of people belongs to Christianity, this much belongs to Islam, this much belongs to Hinduism, and this is how they are divided on the basis of religion. Again, if you pivot, we are pivoting one thing. First we pivot the age, how many peoples are there within this age bracket, then we pivot religion. Okay, see, now this is the base on your languages. This much of people speak Chinese, and this much of people speaks rest of the languages. Again, out of 100, 86 can read and write, where 14 doesn't read and write.
Okay, so this is one important thing, like this much of people spends $15 per day. Okay, this much spends $56 per day onto themselves. This much people spend $30 per head per day. This were 9, this were 6, and there's out of 100 there's one person who spend a lot of money on himself. So he's the person who can control, one person controls the money for all 99, right? See, this is another example with respect to weight. Like out of 100 people, this much are overweight, this much are fit, this much are underrated, and this is what we can say, need some a diet plan, or what we can say, you need to be more fit. Again, if we pivot one more thing, like how many people drinks and how many don't. So these are the numbers. How many of them having shelters or homes, and how many of them has not. This belongs to Wi-Fi. Do they have internet connectivity? How many of them have not? How many of them carry mobile phone? How many of them not? See, this is belongs to graduating degree. This much people have been graduated, this much not. Okay. So you understand the video, guys? I'll ask you one simple question. Yes, please. Okay. Now tell me one thing. Assume that you are, we'll take the same example from the previous slide. Assume that you are the owner of car showroom, right? And you want to sell your car to these people, these 100 people, whom you will target. आप अगर एक कार शोरूम के या कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के अगर ओनर हो, एंड दिस इज योर टारगेट ऑडियंस, यू नो दैट दीज आर द 100 पीपल्स, और मुझे इन्हें अपने एक प्रोडक्ट सेल करना है, तो जो हम लोगों ने एनालिसिस किया, इस पे से आप किन लोगों को फोकस करोगे, किन लोगों को टारगेट करोगे? एनीवन? The people who have more spending capacity or eligible for the loan. Exactly. Any more answers? और हम लोगों ने कितने टाइप से एनालिसिस किया है लोगों को, और क्या हम लोग और डोमेन में देख सकते हैं? दिस इज वन फैक्टर कि okay, the person who is spending more on to themselves can buy a car. What are the other things that could matter over there? सर एज ए ऑनर कंपनी के जो वो हिंदुज्म को टारगेट करेंगे दिवाली और होली पे, कि उनकी कार उसमें ज़्यादा निकलती है, तो वो उनको ज़्यादा टारगेट करने की कोशिश करेंगे. Right, that could be a factor. Right, that could be a factor. Again, any more answers? Yeah, we will see and collect the data if someone is searching for the car, if someone is watching the video or visited the website or searching or browsing for the car, and बस भी मतलब फीचर्स वगैरह जो चेक कर रहे हैं उन्हीं को Right. टारगेट कर सकते हैं हम लोग. Right. So assume that these are your audience. You know that these 100 people have visited your company either through website or your showroom wise. Now you have a target audience. So based on that, this is what we have, and now we have to take a decision for the company, either like how, if I want to sell a car, or if I want to launch a new product, how will I take a decision for my company? Okay, let's start the video again. I'll explain you how I'm trying to say that this thing. See, the first thing is we have here a segregation based on the gender. Okay, so we'll try to look how many of them are females, how many of them are males. Okay, so that could be one factor that we can analyze the business on the basis of gender in the past few months, what we have, right? Again, this could be like
nationality could not be an issue, but this is an important field that I'm talking about. We'll target only those customers whose age is from 25 to 54. You getting my point? These people will be more enthusiastic to buy a new car, right? They will be self-employed, right? They're not dependent on others, right? So age is a major factor that we'll look into. समझ रहे हैं? Yeah, sir. So based on religion, it's not a, what I can say, it's not a big factor, but yes, considering the festivals like Diwali, Dashera, and Eid, then New Year, we can have that planning as well. Languages speak, that doesn't matter. हम लोग because it's not considered this factor as well. This is an important factor. We'll try to target only those customers who can read and write, right? So they will be more, right, interactive, or what we can say, they will know more about the specification, about the car details, right? Again, this is an important factor. We'll try to figure out those people who are spending more onto themselves. If a person is spending almost $90 or $100 per day onto himself, then definitely he can buy or afford a car. See, again, this is not a factor to be considered for our business, at least. Either people get overweight or fit, they can buy a car. Who drink water or not drink water, that's also not a case. See, this is an important case. According to our data, if people have a proper shelter for them, then they can afford a bike or they can afford a car for themselves. So this is also our target audience. Again, those who have Wi-Fi connectivity, those who can afford this thing, mobile phone, then they are willing, or they are able to buy a new car for that. Again, this is one factor. So you guys understand how business take decision on the basis of the data, what they have. This is a very small set of data we took here to understand how we can take the decision. Getting my point? Okay. Okay, now let's move further और समझते like how an e-commerce industry works, or skip like how does this process works actually. What are the amount of data that generated on the daily basis, और उस डेटा को डील किस तरीके से करते हैं, कितने स्ट्रीम्स में हम लोगों के पास डेटा एक पर्टिकुलर कस्टमर से जनरेट होता है, ये हम लोग इस डायग्राम से समझेंगे. See, this is the customer. If you see, this is a customer. He ordered something from Amazon. Okay, let's take an example of Amazon only. Rest of all the e-commerce platform work in the same way as well. Okay. तो एक कस्टमर ने अपना ऑर्डर कंफर्म किया अमेजोन पर, राइट? उसने पेमेंट किया अपने कार्ड से. ओके, वो पेमेंट कंफर्म होने के बाद ऑर्डर कंफर्म हुआ. देन अमेजोन विल सेंड इंटीमेशन टू द नियरेस्ट वेंडर. जो कस्टमर के नियरेस्ट वेंडर रहेगा उसको वो अमेजोन उसको ऑर्डर पास करेगा, एंड देन ही विल पैक दैट ऑर्डर फॉर अमेजोन एंड डिलीवर टू द कस्टमर, राइट? ये प्रोसेस समझा सबको? Now, just for adding one more thing, Amazon will pay after few days, like once order received, it will pay after 7 or 21 days to this vendor what he is delivering to us. So this is how e-commerce industry works. But actually में ये एक काफी सिंपल बिजनेस स्टेटमेंट दिख रहा है, राइट? लेकिन इसके पीछे जब हम लोग बैकएंड इसका चेक करेंगे तो इसके पीछे डेटा कितना जनरेट हो रहा है. एक
एक दिन में अमेजोन में ऑलमोस्ट 10,000 या 1 लाख कस्टमर ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, राइट? दे आर फ्रॉम ऑल डिफरेंट प्लेसेस. So you are having a data of customer like 10 lakh data or 1 million or 10 million of data per day from just customer only. When I say customer data, it means that what is the name of customer, what's the age, what's the phone number, right? What's his residential address, where do he stay, what state, country, all these thing belongs to customer details, right? ये एक फील्ड, ये एक डेटा जनरेट हो गया, राइट? सेकेंड डेटा जो जनरेट होगा वो ऑर्डर पर जनरेट होगा, जो जितना जो हमारे पास प्रोडक्ट है उसमें से क्या ऑर्डर किया कस्टमर ने, राइट? इस कस्टमर ने कौन सा ऑर्डर आईडी ऑर्डर किया, कौन सा प्रोडक्ट था, कौन सा सब प्रोडक्ट था, किस कैटेगरी में आता है, राइट? ये उसका प्राइस कितना है, ये सब जो है ये हमारा ऑर्डर के टेबल में जनरेट हो रही है डिटेल सारी, समझ रहे हैं? अगेन फिर एक और डिटेल जनरेट होगी पेमेंट की बेसिस पर. अगर कस्टमर ने पेमेंट किया तो कस्टमर आईडी क्या था और किससे पेमेंट किया है, कार्ड से किया है, कैश किया है. अगर कार्ड से किया है तो आइदर इट्स अ डेबिट कार्ड और अ क्रेडिट कार्ड. अगर फिर कार्ड से किया है तो हम लोग चेक करेंगे आइदर इट इज वीजा, मास्टर कार्ड, राइट? व्हाट इज द कार्ड डिटेल. इवन आवर कार्ड डिटेल गेट्स स्टोर्ड व्हेन वी डू पे ऑनलाइन पेमेंट. फिर उसके बाद एक फैक्टर चेक होगा वेदर वी हैव कंप्लीटेड द पेमेंट और नॉट, राइट? अगर पेमेंट कंप्लीट हुआ है तो आइदर इट इज टोटली पेड और इट इज ऑन ईएमआई. सो ये सारा डिटेल्स, ये सारा डेटा जनरेट हो रहा है एक पर्टिकुलर कस्टमर के ऑर्डर करने से. ऐसे ही अगर डेली 10 मिलियन 1 मिलियन कस्टमर अगर ऑर्डर कर रहे हैं तो दिस मच ऑफ डेटा इज गेटिंग जनरेटेड. ओके, सिमिलरली जब पेमेंट कंफर्म होगा तो वी विल गिव कंफर्मेशन ऑफ ऑर्डर टू द वेंडर्स. अगेन we'll again here the data will generate कि कस्टमर से सबसे नियरेस्ट वेंडर कौन सा है. if that is the vendor then do we have like do that vendor deals with that particular product which customer has ordered, right? फिर उसका डिलीवरी टाइम कितना होगा, ये सब कुछ डिटेल हम लोग यहाँ ट्रेस करेंगे, राइट? और अगर एक बार पैकेज होकर अगर कस्टमर को डिलीवर्ड हो गया प्रोडक्ट, अगेन वन मोर साइकिल गेट स्टार्टेड कि अगर कस्टमर को प्रोडक्ट पसंद नहीं आया तो दैट इट विल गेट बैक टू अस, राइट? तो उसका एक अलग डिटेल्स और उसका एक अलग डेटा जनरेट होता है. तो एक ऑर्डर पर एक कस्टमर से इतना कुछ, इतनी सारी फील्ड में जो है वो डेटा जनरेट हो रहा है, राइट? ट्रिमेंडस अमाउंट में डेटा जनरेट हो रहा है आज की डेट में. तो इतने डेटा को मैनेज करने के लिए जो है ना, ये सब कुछ जो फील्ड हम लोग देख रहे हैं, डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंटिस्ट, एमएल इंजीनियर, डेटा इंजीनियर, ये सारे दे कम इनटू पिक्चर्स, राइट? इतना डेटा को मैनेज करने के लिए, इनको एनालाइज करने के लिए, इससे यूजफुल इंफॉर्मेशन फेच करने के लिए. अब फॉर एग्जांपल यहीं पर अगर हम लोग एग्जांपल देखेंगे कि if I have a data of a customer or we can say if I have a sales data for last 5 years and I have clean it in a proper way, उसको properly analyze किया, properly clean किया डेटा को, sort किया, ठीक है, उसको analyze किया, and then if I come to know कि hey the people from Pune are ordering this kind of stuff mostly, right? So I'll try to provide some discounts or offers on that part only to those customers, and I'll try to provide that particular product to the nearest to the Pune, right? So that it could be very easy for us to deliver to the customer. Are you guys with me? Are you following with me? Raj, Saif, Bilal, Samir. Yes, I'm listening to you. Okay. So any question till here? No question so far, sir. No question, sir. Okay. So let's move further. What is the business objective actually? This is the process we understand. Now what's business objective? बिजनेस ऑब्जेक्टिव बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड और कंस्ट्रेंट होते हैं, लाइक, एंड व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट ऑब्जेक्टिव, बिकॉज वी विल बी डीलिंग विद द ऑब्जेक्टिव, राइट? व्हाट इज द बिजनेस ऑब्जेक्टिव विल बी आवर प्रॉब्लम स्टेटमेंट. फॉर एग्जांपल, if I say
I want to increase the profit, to increase the sales, right? So that would be a business objective. That business wants to achieve that goal, but that could be a problem. That will be a problem statement for us. Yes, this is the like we want to increase the sales. Now, what should we do? This is our part. This is the part of data analyst, right? So there, what are the various objectives we can increase the sales? This could be an objective, increase the sales, profit, or reduce time, cost, and optimize the process is one more thing, right? अगर एक कस्टमर ऑर्डर कर रहा है दिल्ली से, उसका प्रोडक्ट हम लोग एक्सेप्ट करवा रहे कई साउथ से, फॉर एग्जांपल केरल, तमिल से, एंड इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू रीच आउट टू द कस्टमर. So it's not a process. It's the process is not much efficient, right? Then in that case we'll start losing our customers. So objective ये भी होता है कि we should improvise or optimize our process. अब ये सारी प्रोसेस बैकएंड में लाइक if this business to run this business very smoothly, there's one more process that runs into background continuously. It provides an intelligence that's called business intelligence. So what business intelligence is? It provides an intelligence, or what we can say, an enhancement to the business, right? See, if you see this figure, what is BI? BI is a basically it's a what understanding of the market needs, then collecting the data according to that, analyzing that data, visualizing that data, and then creating a report from that and provide it to the business decision maker. Okay, and then business decision will like decision owner, or what we can say, business owner will take a decision either to take this thing or not, right? So this is how this cycle runs, business intelligence. See, if you see what is the need, so the first thing is understanding the business problem, defining organizational goal, planning liquidity solution in the first step to analytics process. See, as we discussed, it's the same thing what we have discussed in data analytics. It's just data analytics is a part of the business intelligence, or business intelligence a process that's run continuously into background to provide for the in order to run business very smoothly. Okay, so ये details उसी की है, like if you know what your market is. For example, यहाँ पर हम लोग एक और example consider करते हैं. अब हम लोगों ने सेम एग्जांपल हम लोग कंसीडर करते हैं एक कार ओनर शोरूम का. ओके, हम लोगों के पास लास्ट 5 इयर्स का डेटा है, ठीक है, एंड हम लोगों ने उसको एनालाइज किया डेटा को प्रॉपरली, और उसमें से ये फाइंडिंग्स आई कि 2020 तक के हमारा सेल्स प्रॉपर था, 21 में जो है सेल्स वो ड्रॉप हुआ है. ओके, ठीक है. सी, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग एग्जांपल आई एम टेकिंग हियर so that you guys can understand it. For example, अगर हम लोगों के पास लास्ट 5 ईयर का डेटा है, अब उसको हम लोगों ने प्रॉपरली एनालाइज किया, एंड वी केम टू नो कि 2020 तक के जो सेल्स था वो प्रॉपरली हमारा इंक्रीज हो रहा था, लेकिन 2022 में जो हमारा सेल्स है वो ड्रॉप हुआ है, राइट? तो हम लोगों ने सब इमीडिएटली मार्केट एनालिसिस शुरू किया कि क्या इशू, क्या एक्चुअल में सेल्स क्यों ड्रॉप हुआ है, राइट? We try to understand the business problem, why sales to get drop, right? फिर उसके बाद हम लोगों ने उसके अकॉर्डिंगली डेटा कलेक्ट करना शुरू किया. We will run a campaign, we'll try to run campaign on social media, we'll try to take a review from customers, okay? और उसके बाद हम लोग सारा डेटा कलेक्ट करेंगे, उसको एनालाइज करेंगे प्रॉपरली, प्री प्रोसेस करके, सॉर्ट करके, and then suppose we visualize the data and we come to know that most of our customer, जो कस्टमर हम लोग के लास्ट 5 इयर्स में बने थे, those are switching now to electric vehicles, right? They are going to the green energies type vehicles. So then that will be a decision point for the business to take, either to jump into the what we can say green energy resources vehicle or not. See, this is how business works. Then you first see that there is a drop in your sales. आपने उसके अकॉर्डिंगली डेटा कलेक्ट करना शुरू किया,
you analyze that data properly, you find out some insight from that. Okay, आपने उस डेटा को प्रॉपरली मंथ वाइज अरेंज किया, उसको ईयर वाइज अरेंज किया, ओके, उसको प्रॉपरली विजुअलाइज किया। उसमें जो जो फाइंडिंग्स मिले वो ये थे कि जो हमारे पास में कस्टमर्स है, उन कस्टमर्स के मोस्ट ऑफ कस्टमर्स जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ शिफ्ट होने लगे। So now business as a car owner manufacturer, I will be taking a decision either to launch a product with electric vehicle or not. So this is how that cycle works. You guys got this process? Okay. कोई एक एग्जांपल आप दे सकते हो इस तरीके से कि हम लोग एक बिजनेस इंटेलिजेंस कहाँ यूज कर सकते हैं? और जैसे कि सर आजकल शॉपिंग मॉल्स यूज करते हैं कि रेगुलरली हमसे, मतलब जब बिलिंग काउंटर पे जब जाते हैं तो नंबर लेते हैं, तो वो भी एक तरीके से डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। फिर वो लोग उनके जो शॉपिंग, मतलब कुछ ऑफर आता है, फिर वो लोग मैसेजेस सेंड करते हैं ऑफर से रिलेटेड कंटिन्यूअसली। राइट, ये भी टाइप से परफेक्ट, बिजनेस इंटेलिजेंस हुआ अकॉर्डिंग टू मी। राइट, एग्जैक्टली। दिस इज द वेरी कोर एग्जांपल ऑफ बिजनेस इंटेलिजेंस एक्चुअली वॉलमार्ट फॉलोज। इसका आगे हम लोगों ने केस स्टडी भी लिया है, जो हम लोग देखेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग केस स्टडी और सेम एग्जांपल्स वहां पर यूज किया हुआ है। अब हम लोग देखते हैं एक डेटा एनालिस्ट का काम क्या होता है, व्हाट डज डेटा एनालिस्ट डू। ओके, डेटा एनालिस्ट 3 चीजों में डील करता है, लाइक ही इज मोर इनटू कलेक्टिंग द डेटा, डेटा कलेक्ट करना, उसको एनालाइज करना, प्रॉपरली एनालाइज करके उसको विजुअलाइज करना, उसमें से इंसाइट फाइंड आउट करना और उसकी एक रिपोर्ट क्रिएट करना। दिस इज व्हाट अ वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन ऑफ डेटा एनालिस्ट इज। ओके, इसमें थोड़ा और डिटेल में हम लोग देखते हैं। अब इफ आई से कलेक्टिंग अ डेटा, इसका मतलब क्या? फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग देख रहे हैं कि पीपल आर विजिटिंग आवर वेबसाइट, तो वेबसाइट से डेटा जनरेट हो रहा है, राइट? व्हाट इज द कस्टमर नेम, what's the timing that he log in, what's the time that he log off, right? What is his profession, what does he do, right? ये सारा डेटा हमारा वेबसाइट से कलेक्ट हो रहा है, उसको हम लोग को स्टोर करना होता है। तो हम लोग स्टोर करने के लिए यूज करते डेटाबेसेस यूज कर सकते हैं, जो मोंगोडीबी है, माई सीक्वल है, इसमें वो सारा डेटा के स्टोर होता है। अब इट्स टोटली रॉ डेटा, राइट? उसमें कोई इंफॉर्मेशन, जब तक कि हम लोग डेटा में से कोई ट्रेंड या कोई एक पैटर्न उसमें से फेच आउट नहीं कर लेते, टिल देन दैट डेटा इज टोटली डम्प, राइट? वहां पर वो डेटा एज अ डम्प स्टोर रहेगा, राइट? अब जब वहां से आप डेटा फेच करोगे, सो देयर यू विल बी यूजिंग SQL लैंग्वेज, राइट? SQL, or maybe we have an extension to Python as well. So you will be using SQL to clean that data, to pre-process that data. Cleaning, when I say cleaning the data, we have that too in the next slide, but I'll give a short intro about what cleaning is. For example, if you are capturing customer name, customer address, customer uh, age, okay, its profession, okay. So see, for example, if customer name is Sufyan, his age is 30, okay, and his profession is a salaried, okay. So these are the details that we are going to save, okay. Similarly, the second customer enters, it will save his. Similarly, second customer will log into our website, will save his name, his age, his mobile number, or whatever details we are going to save over there, right? Okay, so now what cleaning means here is कि एज का एक कॉलम हमारे पास है, राइट? एज के कॉलम में प्रॉपरली नंबर फॉर्मेट एंटर होना चाहिए, लाइक इफ माई एज 30, देन 30 शुड बी देयर, इट शुड नॉट बी THIRTY 30, राइट? अगर if I'm capturing name, then that name should go to proper name column itself, राइट? ऐसा ना हो कि एज नेम के कॉलम में हम लोग डिजिट्स जो उसके अंदर ऐड हो रहे हैं, एड्रेसेस में प्रॉपरली डिजिट्स के साथ नेम्स और या तो अल्फा न्यूमेरिक टर्म्स आने चाहिए। सो दिस इज व्हाट क्लीनिंग इज। अगेन, after cleaning that data, we'll try to sort that data. Sorting, it means
what, for example, if you want to see what are the latest customer that has logged into our website, तो हम लोग उसको अरेंज कर देंगे कि सबसे लास्ट में किस कस्टमर ने लॉग इन किया था, देन उसके बाद किसने किया, उसके बाद किसने किया, राइट. This is what sorting is. If I want to sort the data on the basis of state, so I'll go to the state column and I'll try to arrange it on the basis of state. कि okay, महाराष्ट्र से हमारे पास 200 कस्टमर है, so I'll put those 200 name first, then from Gujarat, from MP, from Delhi. In this way we'll arrange those customers, right? So this is what sorting is all about. Again, after sort, this is what we call as analysis. This all come in analysis. So once you arrange the data in a proper way, then you will find some trend into it. Yes, for the month of September or October, from Maharashtra itself, we got this much of sales from what we can say, from jeans or from hoodies itself, right? So this is how we find out trends from the data. Okay. Once we found the trend, we'll create a report for that. This is what data analysts do actually. Okay. So to clean the data, to pre-process the data, to sort the data, we use SQL, and then to create the report, to create this part. A report is the final part of the data analyst. So here we use visualization tool. Visualization tool, we have Excel, we have Power BI, Tableau, Looker. Okay. So this is in short the work of data analyst. It will take the data from the business or from the website. It will capture the data into directly your database. It will fetch the data from your database to analyze it. It will find out some trend, some insight from that data, and will create the report for that. Okay. अब थोड़ा और डिटेल में देखते हैं कि आर्किटेक्चर कैसा होता है. ये आर्किटेक्चर होता है डेटा का, and this is what data analyst or we can say data engineers deal with. First is data preparation. This is not a data preparation, actually this is a data storing. Okay, यहाँ पर हम लोग डेटा कैप्चर करते हैं, जो भी जहाँ से भी वेबसाइट से डेटा आ रहा है, अगर वेबसाइट से डेटा आ रहा है या कहीं एक बड़े सर्वर से डेटा, ज़्यादा अमाउंट में डेटा जनरेट हो रहा है. फॉर एग्जांपल फ्लिपकार्ट का डेटा, थाउजेंड्स एंड थाउजेंड कस्टमर एक दिन में लॉग इन कर रहे हैं, तो उन कस्टमर्स का डेटा, उनका नाम, उनका नंबर, उनकी एज, राइट, ये सब डेटा एक बहुत ह्यूज अमाउंट में क्रिएट हो रहा है. तो ये हम लोग एक्सेल वगैरह में सेव नहीं कर सकते इसको, राइट. एक्सेल हैव सम लिमिटेशंस. तो ह्यूज अमाउंट में जो डेटा जनरेट होता है उसको क्लाउड सर्वर पर उसको स्टोर करना पड़ता है. तो वो होते हैं सिक्वल सर्वर, ओरेकल, और बहुत सारे उसमें सैप है और बहुत सारे अलग अलग डेटाबेसेस है जहाँ पर डेटा डायरेक्टली स्टोर होता है. ओके. सिमिलरली अगर हमारे पास कोई छोटा डेटा है, फॉर एग्जाम्पल कोई एक कार शोरूम का हमारे पास डेटा है जहाँ पर हमको एनालिसिस करना है, जहाँ पर कुछ थाउजेंड्स या लैक्स में एंट्रीज है, तो वी कैन यूज एक्सेल देयर, वी कैन यूज CSV, कभी कभार TXT फाइल में भी डेटा होता है, राइट. सो ये दो टाइप का हमारे पास डेटा है, इसको हम लोग एक्सट्रैक्ट करेंगे. एक्सट्रैक्ट इट मीन्स fetching the data from the database, right. In this case we have this Oracle as a database, and in this case we have database as this thing, Excel file is our data. Okay, इसको हम लोग एक्सट्रैक्ट करेंगे. अब ट्रांसफॉर्म इट मीन्स cleaning the data, whatever we see right in the previous slide. Transforming the data means cleaning, sorting, pre-processing the data. If we have numbers, then remove that numbers. Most of the time we have null values in the data. For example, एक कस्टमर का हम लोगों ने कुछ डिटेल्स कैप्चर कर रहे हैं, तो उसका एज अगर कैप्चर नहीं हुआ तो इट विल टेक नल वैल्यूज ओवर देयर. तो बहुत सारे ऐसे नल और ब्लैंक वैल्यूज भी रहते हैं. तो टू डील विद दैट, टू रिप्लेस नल वैल्यूज विद द प्रॉपर वैल्यूज, ये सब कुछ जो यहाँ पे ट्रांसफॉर्म में होता है. ओके. वंस वी ट्रांसफॉर्म दिस ऑल दिस डेटा इन अ प्रॉपर रीडेबल फॉर्मेट, और वी कैन से विजुअलाइजिंग डेटा, okay, then we load that data into a data warehouse. Okay, data warehouse basically works for your to store your proper data, right. जो आपका एक क्लीन प्री प्रोसेस डेटा है वो हम लोग एक डेटा वेयरहाउस में स्टोर करते हैं. नाउ अगर फॉर एग्जांपल एक बिजनेस जो डील कर रहा है वो ऑपरेशन में डील करता है, HR में, फाइनेंस में, सेल्स में, इतने सारे फील्ड में एक बिजनेस डील करता है,
तो इतने सारी जगह से जब डेटा आ रहा है तो उसको क्लीन करके एक यूनिवर्सल प्लेस में हम लोग उसको प्लेस करते हैं, सो दैट ईच फील्ड और ईच स्ट्रीम कैन यूज देयर डेटा अकॉर्डिंगली। अगर यहाँ पर ओवरऑल डेटा सेव है, फॉर एग्जांपल लास्ट मंथ कितना सेल हुआ है वो डेटा यहाँ से स्टोर्ड है, ओके। तो जो सेल्स टीम है, फाइनेंस टीम है, दे कैन इजीली फेच देयर डेटा एंड देन दे कैन क्रिएट देयर रिपोर्ट, डैशबोर्ड और व्हाटएवर, एंड देन यू कैन सेंड इट टू बिजनेस यूजर। सिमिलरली यहाँ पर अगर हमारे पास कस्टमर का डेटा अवेलेबल है, कि कस्टमर का नाम, उसका नंबर, उसका एड्रेस, राइट, तो यहाँ से मार्केटिंग टीम विल टेक आउट द डेटा फ्रॉम द कस्टमर एंड दे कैन क्रिएट देयर विजुअलाइजेशन रिपोर्ट एंड देन दे कैन सेंड इट टू बिजनेस यूजर्स। तो इस तरीके से एक यूनिवर्सल प्लेस पर हम लोग डेटा को स्टोर करते हैं, इट्स कॉल्ड डेटा वेयरहाउस, एंड द डेटा दैट स्टोर्ड इन वेयरहाउस इज टोटली क्लीन एंड प्री प्रोसेस डेटा, okay. And then this is the part of visualization where we create dashboard, report, scorecards. These all are things which we call as reporting. Once it has been created, then we show it to business. We explain the what are the insight from the data we got, okay, and then business will take the decision accordingly, right? ये architecture है. So this is what I could also refer as a work of data engineer as well. Data engineer has to deal with extracting the data, transforming the data, loading it into the proper data warehouse, okay, and then data analyst will fetch that data. He will visualize this data, he will create a analyze that report, he will create a report and send it to business users, okay. ये डायग्राम समझा सबको? Okay, I take it as yes. Okay. Before moving to case study, I would like to have some question from you guys. Please ask some questions. Then then I'll understand like how much you are able to accept the case study or how much you will understand the case study. Any question, guys? डेटा वेयरहाउस विषय एक्सप्लेन करो नहीं। Okay. ये concept Shehbaz, right? This one, data warehousing. Okay. See, क्या होता है ना, हम लोगों के पास एक स्ट्रीम से डेटा नहीं होता है, मल्टीपल स्ट्रीम से डेटा हमारे पास कैप्चर होता है। एक अगर बिजनेस हम लोग कंसिडर करेंगे, जैसा ये हम लोगों ने एग्जांपल देखा, ये यहाँ पर कस्टमर की डिटेल्स एक अलग स्टोर हो रही है, राइट, मतलब एक अलग डोमेन है, कस्टमर डिटेल्स एक अलग डोमेन है, ऑर्डर एक अलग डोमेन है। ऑर्डर में हम लोग देखते हैं कि ऑर्डर क्या प्लेस किया, ऑर्डर आईडी क्या है, प्रोडक्ट क्या था, कौन सी कैटेगरी में प्रोडक्ट आता है ना। वही पेमेंट का एक अलग सेक्शन होता है कि पेमेंट में कार्ड से पेमेंट हुआ या डेबिट कार्ड से हुआ या कैश हुआ या ईएमआई से हुआ, राइट। ये सारा डिटेल्स एक अलग अलग डिटेल्स, राइट। ये कस्टमर बेस्ड डिटेल है, ये ऑर्डर बेस्ड डिटेल है, ये पेमेंट बेस्ड डिटेल है, राइट। तो ये सारा डिटेल्स जो है ये एक साथ जनरेट हो रहा है, राइट। ये सारा इन सब का डेटा जो है वो एक साथ जनरेट हो रहा है, राइट। अब जो वेबसाइट पर वो डेटा जनरेट हो रहा है वो डायरेक्टली यहाँ के स्टोर हो रहा है ओरेकल में, अपने वेयरहाउस में, डेटा बेस में, राइट। अब ये डेटा टोटली रॉ डेटा है, इस पर हम लोगों ने कुछ अभी तक इस पर कुछ क्वेरी अप्लाई नहीं किया, राइट। इसमें से कुछ इंफॉर्मेशन अभी तक हम लोगों को मिली नहीं है, ये सिर्फ लाकर यहाँ पर डंप किया हुआ डेटा है, ठीक है। अब इसको जब हम लोग इसको यहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं और इसको क्लीन करते हैं हम लोग ये डेटा को। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये डेटा एक साथ में लाइक एक ही टेबल में इतना सारा डेटा अगर आ रहा है तो देयर माइट बी पॉसिबिलिटी कि वो डेटा लोड होने के लिए टाइम ले, राइट। या जिस बिजनेस को उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है वो डेटा भी वहां पर थ्रो हो रहा हो, राइट। तो इसीलिए ट्रांसफॉर्मेशन में ये पार्ट हम लोग करते हैं कि कस्टमर्स का डेटा एक अलग टेबल में स्टोर करें, पेमेंट का डेटा एक अलग टेबल में स्टोर करें, राइट। उसके बाद ऑर्डर का डेटा एक अलग टेबल में, वेंडर का डेटा एक अलग टेबल में। यहाँ पर सेग्रीगेशन होता है, यहाँ पर फिर क्लीनिंग होती है डेटा की प्रॉपरली, राइट। उसका प्री प्रोसेस करते हैं, उसको सॉर्ट करेंगे प्रॉपरली, अगर उसमें कुछ नल वैल्यूज है तो उसको डील करेंगे वहाँ पर,
और ये टोटली क्लीन डेटा जो यूजेबल डेटा है, अब यूजेबल डेटा ये राइट, यहाँ पर कोई नल वैल्यूज नहीं होना चाहिए, यहाँ पर हम लोग को जिस फॉर्मेट में डेटा चाहिए था उस फॉर्मेट में डेटा अवेलेबल हो गया, देन विल लोड दैट डेटा इनटू वन पर्टिकुलर डेटा वेयरहाउस। तो डेटा वेयरहाउस कुछ नहीं, एक स्टोरेज रहता है, जैसे हम लोग का एक्सेल फाइल कैसी होती है, ऐसे ही एक क्लाउड पर एक डेटाबेस बना हुआ रहता है, एक स्मॉल पार्ट ऑफ डेटाबेस जिसको हम लोग बोलते हैं वेयरहाउस, डेटा वेयरहाउस। समझा? यहाँ पर जो डेटा स्टोर होगा